Hello everyone. Am I audible? Please let me know if I'm audible in the comment section so that I can start. Okay. Okay. So hope you guys have enjoyed the music and build up some josh. So welcome to the session that is full of insights. Okay. Today in the session, I will be delivering to you the information about GDSC Community Chapter BIT Sindri. Okay. And as all of you are aware that GDSC, a community chapter, has been established is in BIT Sindri in our university for the very first time in the year 2021. Okay. So many of you don't know what it is and why it is. What are the benefits that one will get from it? So today in the session, I will convey you all the benefits that being a GDSC member one will get, what GDSC is all about, what is its motto. We will be having a fun event, or you can say quiz event, in between the session. Okay, and at last I will demonstrate you how one can be a member of this community chapter. Okay, and at last I will be sharing my experience, uh, my experience of being the GDSC lead for the session 2021 to 2022. Okay, so with that, let us start the session. So guys, if you are having any query in between the session, you can put in the comment box, or at the end, and at the end of the session I will answer your each of the queries. Okay, so now let us start the session. So firstly we will introduce you all with the faculty advisor who will be going to supervise this community, the GDSC community, for the session 2021 to 2022, and will be going to provide us with the official documentations whenever needed to uplift this community. Okay, so our one of the faculty advisor is Professor Dr. Ghanshyam sir. Okay, he is a training and placement cell officer at BIT Sindri, senior administrative officer, also coordinating to Dean Alumni Affairs, and also playing the role of a professor. Okay, here is the link. Here is the LinkedIn link of Professor Dr. Ghanshyam sir is provided. You can know more about him at this link. Okay, so Jishan, please next slide. So here is our next faculty advisor, that is Professor Dinesh Kumar Prabhakar sir. He is the professor in charge of Hackathon and Coding Club BIT Sindri, also a mentor at CodeChef Chapter BIT Sindri, an assistant professor, and has been a research fellow at IIT ISM Dhanbad. Are we having Dinesh Kumar Prabhakar sir among us? Yes, yes, we are having. So, sir, please. Hello, sir. Am I audible? Yes. You are audible. Yeah. Yes, sir. Sir, please introduce yourself, or add a note from your side. Good morning. Good morning to all. This is Dinesh Prabhakar from IT department. I think we have joined us Ghanshyam sir now. So good morning, sir. Yes, sir. Yes. Very good morning. Very good morning, sir.
Okay, am I audible? Yes, Yes, sir, sir. you are Yes. audible. Right. You are audible, sir. Once again, good morning to all. First of all, I would like to thank organizing to inviting me for this session. And as we know, we are here in the introductory session of GDSC. So, what the GDSC does actually? It provides us the platform to interact with the students in the. Hello, am I audible? Yeah. Yes, sir. Yes, It you are provides the audible. platform to institute students to interact with them and in the peer group to grow their knowledge. And the, the platform where we work will be the technology of the Google. Okay. So as we know, Google has the highest technology in the IT world today. It starts from the search engine to YouTube and different platforms, uh, including GDSC as well, because it provides us the to the students only, where the different institute has their can have their own community. Okay, where the institute students can get the opportunity to learn the Google's technology. So I think the opening of this chapter in our campus definitely will make some great impact, and the students of our institute will get benefited with this. And I congratulate the students of this team member for getting selected as a team lead, Miss Anjali, and one more person is there. I forget the name of the person, and I strongly believe the student will get more benefit in this. Okay, and with this, I say best of luck to all the members. And further, the team members will be introducing about the chapters, different role, and what they are going to introduce today. So thank you. Thank you, sir. Thank you for your best wishes. So we are having Dr. Ghanshyam sir among us. So very good morning, sir. Very good morning to all of you. Okay. Uh, sir, please say something about and give us your best wishes to lead this community, and this will encourage us to lead this community in a fairly good manner. राइट, तो सबसे पहले जो है आज टीचर्स डे पे मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जो है आज का दिवस बहुत ही जो है पावन है और बहुत पवित्र दिवस है, जिसमें मुझे लगता है कि ये जो है गिव और टेक और इन और आउटपुट की बात नहीं है। और अभी इस एरा में अभी आप लोग जो है आउटकम बेस्ड एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये गूगल डेवलपमेंट स्टूडेंट्स क्लब्स और अंजलि अंजलि की जो है बहुत सारी जो है उपलब्धियां जो है मुझे गौरवान्वित करती है, और मैं अपने बच्चों की मार्केटिंग जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में कर रहा हूँ। तो ये अभी जो है हमारा जो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, और साथ ही साथ जो है अभी आपका जो है आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, जहाँ पे बात हम करते हैं नॉलेज की बात करते हैं, साथ ही साथ हम जो एटीट्यूड की बात और अलोंग विद स्किल। इज इट क्लियर? तो कहा जाता है कि जो योर लर्निंग, व्हाट इज द लर्निंग? लर्निंग इज नथिंग बट द एक्वायरिंग ऑफ द नॉलेज दैट मेक्स परमानेंट चेंज इन योर पर्सनैलिटी। इज इट क्लियर? तो कहते हैं उसको थोड़ा हिंदी में भी कहते हैं कि भाई जब हम बात करते हैं तो कहते हैं जरा दिमाग से, थोड़ा दिल से, थोड़ा कर्म से। मतलब जब हम दिमाग, दिल और कर्म, मतलब देखिए ये जो दिमाग है ना, इससे मतलब कहते हैं माइंडफुलनेस, उसके बाद कहते हैं हार्टफुलनेस, और उसके बाद कहते हैं स्किल। और स्किल जो केवल जो है कहते हैं हार्ड स्किल एंड द सॉफ्ट स्किल। तो वर्ड से ही मीनिंगफुल है कि हार्ड दैट इज योर डिग्री, बीटेक डिग्री और द टेक्निकल नॉलेज जो आप एक्वायर कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो सॉफ्ट स्किल मतलब हाउ टू, मतलब कहते हैं ना कि उसके लिए जो आपने जो हार्ड स्किल को अचीव किया, उसको आप फिर जो है कहते हैं कि उसके लिए जो मतलब कहते हैं सोने में सुहागा,
कि कहते हैं कि उसके साथ जो है आपका लीडरशिप क्वालिटी आता है, जो अब सबसे जरूरी है जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसमें आपका जो लीडरशिप क्वालिटी है और आपका कम्युनिकेशन स्किल, मतलब उसमें अगर स्किल में जाएगी तो राइटिंग और वर्बल दोनों आता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल राइटिंग स्किल, मैनेजरियल जो है मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल, और लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग है। जैसे अभी गूगल, मतलब कोई भी कंपनी आपको लेकर जाती है, मतलब जो भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं, इंडस्ट्री रेडीनेस की बात करते हैं, वहां पे आपको अचानक कोई प्रॉब्लम आएगा, मतलब कहते हैं ना जहां पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, तो उसी से ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है अभी जो है कहा गया कि हमारे बच्चों को हम जो है कैसे इंडस्ट्री के लिए रेडी करेंगे। तो बहुत पहले ही सोचा गया था, जो हमारा जो है मतलब आपका वाशिंगटन अकॉर्ड था, कि हमारा जो है मतलब कहते हैं ना रिमेम्बरिंग, मतलब याद, देन दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, फिर जो है आपका एनालिसिस ऑफ दैट प्रॉब्लम है, देन एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज है, उसके बाद देन आफ्टर इवैल्यूएशन है, आप अपने आप को जो कोई इवैल्यूएशन है, एंड अबव ऑल दैट इज हाउ टू क्रिएट, मतलब हाउ टू क्रिएट द न्यू सॉल्यूशन फॉर द ओल्ड प्रॉब्लम। कोई भी दुनिया में कोई चीज नई नहीं आती है, अगर आप देखोगे तो जितना भी फंडामेंटल वर्क है, जिसको हम कहते हैं जिसने सारी दुनिया को चेंज कर दिया, उसके बाद जो भी काम हुआ वो दैट इज द रिसर्च, दैट इज द रिसर्च। तो कहते हैं क्रिएट, मतलब हाउ टू क्रिएट अ न्यू सॉल्यूशन ऑफ अ ओल्ड प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? और इसका मतलब है कि दुनिया में जितना भी वर्क हो रहा है, हाउ टू मेक द लाइफ ऑफ द मैन इजी, इजीनेस के लिए कहते हैं ना हाउ। तो जो है अंजलि, और बहुत पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी देखिएगा जो डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, दैट इज नथिंग बट आवर द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और जो मिशन है और जो ऑब्जेक्टिव है, हाउ टू अचीव दैट विजन, उसमें हमारे सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आप एक स्टूडेंट्स भी हैं, हम फैकल्टी भी हैं, हमारी इंडस्ट्री भी है, हमारे एलुमनाई भी हैं, ये सारे हमारे जो कॉम्पोनेंट्स है, दे आर ट्राइंग फॉर देयर बेस्ट। और अभी जो जमाना है, जो जहाँ कंपटीशन की बात आती है, वहां पे बात उठती है कि जो है कि दुनिया में अगर हमको compete करना है फ्रॉम चाइना, अमेरिका, योर यूके, जर्मन, यूएसए, सारी कंट्री हमसे आगे है। आप कोई ऐसा कंट्री बता दीजिए जो थोड़ा पिछड़ा हुआ कंट्री, आप हटाइए लंका को, इवन देखिए लंका भी किसी चीज में हमसे आगे। आप बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश भी हमसे जो कॉटेज इंडस्ट्री बहुत आगे निकल गया। पाकिस्तान, वैसे लोगों से कभी अपने को कंपेरिजन नहीं करना चाहिए जो हमारे कहीं नहीं, बाकी हमको हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन से देखते हैं। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा तो आप हॉरिजेंटल तक आ सकते हैं, डिप्रेशन में नहीं जा सकते। तो उसके लिए 3 ही मंत्र दिया गया था, ट्रिपल एस की बात हुई थी कि दैट इज ए स्पीड, है ना, दैट इज ए स्केल, मतलब हमारे पास वर्क का जो स्केल है इट इज वेरी लार्ज। इज इट क्लियर? सो स्केल इज वेरी लार्ज। तो स्केल बहुत लार्ज है, तो हाउ टू कंप्लीट आवर वर्क विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, तो उसके लिए बात उठती है दैट इज द योर स्किल एंड द स्पीड। और वो कहानी भी हमें याद आती है कछुआ और खरगोश वाला, तो वो था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देखो जमाना चला गया, कहते हैं कि मतलब कि स्पीड, कंसिस्टेंसी चाहिए हमको, नॉट द स्लो एंड जो है हमारा रेस को जिताएगा, बट द फास्ट एंड द कंसिस्टेंट श्योरली विंस द रेस। फास्ट एंड कंसिस्टेंट। तो मार्केट में जाना है यार, तो मार्केट में तुमने जो वर्क को प्रोड्यूस किया, एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हार्ड स्किल हो गया, अब उसको तो मार्केट में बेचना है ना। तो बेचने के लिए आपको क्या चाहिए? मार्केटिंग चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, और साथ साथ जो है उसका पहले ब्रांडिंग चाहिए। तो ब्रांड, अंजलि हमारी ब्रांड है, तो मैं बड़ा शब्दों को लेता हूँ जिंदगी में, और प्रभाकर जैसे गुरु है, और जयेश जी लोग दिख रहे हैं, सब हमारी टीम मेंबर्स है। तो कहते हैं ना कि जो हमारी बगिया है ना, जो हमारा गुलदस्ता है, तो गुलदस्ता का अपने आप में इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस अनलेस जो है उसमें तरह तरह के फूल होते हैं। और जो माली होता है ना, जिसको खूबसूरती से उसको निखारता है, उसको एक गुच्छे में पिरोता है, और उसके बाद उसका एसेंस जो है यार, उसको एसेंस अपने आप नहीं आती है, हवा आती है, दैट इज द ब्रांडिंग। तो ये ब्रांडिंग जो है उसका एक मार्केटिंग है, और मार्केटिंग के बाद तब अंजलि को तो मार्केटिंग करेंगे ना, और हमारी जो टीम है दिखता है गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में। तो किसी बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर लॉन्ग टर्म 5 साल, उम्र 5 साल इंतजार नहीं करते हैं, मुझे 1 साल में चाहिए, मुझे 1 साल में 30 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। और ये मुझे बहुत खुशी है, और ये स्किल का जमाना है यार। मैं तो बार बार सुनता हूँ कोडिंग कोडिंग कोडिंग। बहुत पहले प्रभाकर जी ने यहाँ पे जो है एक क्लब की स्थापना की थी,
तो मुझे उस समय उसका इम्पोर्टेंस जो है मालूम लगा था कि इसका आने वाले भविष्य में कितनी ज़रूरतें हैं, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, जो आने वाला जो भविष्य है ना, जिसान भी दिख रहा है, जिसान से भी हम रूबरू रहते हैं यार, हमारा तो ब्रांड दिख रहा है सब, जिसपे हम अपने इस उज्जवल भविष्य की परिकल्पना की है। मतलब हमारे इन बच्चों ने वो क्रिएट किया है जो अपने जो जिसके लिए पहले हमारे यहाँ कोई बेस नहीं था। इन्होंने एक उसका बुनियाद तैयार की है और बुनियाद पे एक महल को खड़ा किया है। और मुझे लगता है कि ये जो बेस बना है, अब लॉन्चिंग पैड हमारा तैयार हो चुका है और ये हमारा लॉन्चिंग पैड से बस मिसाइल को दाग दे रहा है। इज इट क्लियर? तो एक बात हम लोग कह रहे थे कि कोडिंग का, तो अभी जब हम पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री 4.2 की बात होती है, तो इंडस्ट्री 4.2 ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, न जाने कितनी कितनी बड़ी बड़ी जो है बातें होती है, डाटा एनालिटिक कंपनी जो है, एडवांस एक्सेल और न जाने बहुत बड़ी पाइथन है ना, बेसिक जो है कोडिंग का। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो जमाना है उसमें मतलब कहते हैं ना कि विदाउट स्किल जो है इंजीनियर हैज नो मीनिंग। मतलब बंदर अगर कूदना भूल जाए, बंदर का क्वालिटी क्या है, वो जंप लगाता है और उसके वो एक एक ऐसा ऐसा मतलब टहनी अगर उसको आप खींच दीजिएगा तो टूट जाएगा, बाकी बंदर क्या कहता है, उस टहनी का सहारा लेता है और छलांग लगा जाता है और टहनी नहीं टूटती है। यही तो स्किल है, स्किल। और ये आजकल सिंगल स्किल का जमाना नहीं, मल्टीपल स्किल का जमाना है। मल्टीपल स्किल मतलब आपका कैनवास जो है ना, ऑल कलर से फुलफिल्ड होना चाहिए। तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। आज सुबह सुबह जो हम जरा 4 घंटा जो टीचर्स डे पे मुझे जो भावनाएं आती है ना, तो मैं उसको व्यक्त करता हूँ। और कभी भी हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यार देखो, नंबर 10, 5, 20 ये नंबर कोई मायने नहीं रखता है। जिंदगी में मायने क्या रखता है कि तुमने क्या अचीव किया, फाइनल रिजल्ट, जो डेस्टिनेशन पे तुम कैसे पहुंचे। डेस्टिनेशन पे जो लड़का शॉर्टकट मारता है ना, वो नहीं सीख पाता है। बाकी जो आदमी डेस्टिनेशन पे बहुत दूरी तय कर कर आता है, तो रास्ते में उसको पर्वत मिलते हैं, पहाड़ मिलते हैं, ऑब्स्टेकल मिलते हैं, वो स्टक होता है, प्रॉब्लम के साथ स्ट्रगल करता है और अंत में उसके पास सोल्यूशन आता है। क्यों सोल्यूशन आता है? क्योंकि उसका गोल स्मार्ट होता है, स्पेसिफिक रहता है, मेजरेबल रहता है, रियल रहता है, टाइम स्पेसिफिक रहता है। जो गोल हम कर लेंगे, अरे 5 साल में कर लेंगे, कोई गोल होता है 5 साल, 5 साल में नहीं, 1 साल में। सब तुम लोग जो है अंजनी दिख रहा है, सब अब हम क्या क्या बोले, सब तो दिख रहा है ब्रांड इसी पे। ये लोग कोई टाइम का इंतजार किया है क्या? आज देखते हैं कल को रिजल्ट ले आता है, कल देखते हैं वो लिंक्डइन में को फोटो चले आता है, ये मिल गया सर हमको, ये मिल गया है। तो कभी कभी हम गलती करते हैं, जिसान भी कभी कभी हम पूछते क्या मिला, इतना इसको मिला रहता है तो भुला जाता है, तो कुछ दूसरा वाला दोस्त करेक्ट करता है, सर ये वाला इसको मिला हुआ जरा लिख दीजिए। तो हम तो लिंक्डइन में तो लिखते हैं तो मतलब मेरा दिल गदगद हो जाता है। दिखाते हैं दुनिया के, दुनिया वाले देखो बीआईटी सिंदरी क्या है, जो तुम सोचते हो नहीं है। बीआईटी सिंदरी जो है, हम वैसे हैं जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में विश्वास नहीं करते हैं, हम रिजल्ट में विश्वास करते हैं। जिस तरह हमारे जो है प्रेडिसेसर्स थे, जिस तरह हमारे पूर्वज थे कि एक नाइकोल प्रिज्म से नोबेल प्राइज ले लिया, वो सर सीवी रमन के हम वंशज हैं। हम जो है कलाम के वंशज हैं, हम जो है भाभा के वंशज हैं, हम विश्वेश्वरैया के वंशज हैं। कि जब सीवी रमन के, हम जगदीश चंद्र बसु के, मेघनाथ साहा के, हम सत्येंद्र नाथ बोस के हैं जो आइंस्टीन के साथ अमर हो गया। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल गोल इज रीच्ड। और मैंने आज जो फेसबुक पे, लिंक्डइन पे आपके टीचर्स डे के लिए मैंने उद्गार व्यक्त किया है, आप उसको जरूर पढ़िएगा। ये पंक्ति आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रेरित करेगी। मेरा कोटिश जो है आशीर्वाद। और प्रभाकर जी, मैं आपका हमेशा प्रशंसक रहा हूँ, यू आर द मैन ऑफ योर वर्ड्स। तो आप जो है, हम मेरे बच्चों को इसी तरह गाइड करते रहिए। आप, मेरा तो आशीर्वाद रहता है कि आप भी जो है बड़ी बड़ी कंपनी में चले जाइए। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि आप जो है एक जगह स्थिर रहिए, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति की जरूरत जो है ग्लोबल पैमाने पर है। परंतु आप जहां भी रहिएगा, हमारे जो बीआईटी के बच्चे रहेंगे, वो बच्चे हैं और आएंगे, और जो फिर बाहर बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, उनका मार्गदर्शन करते रहिएगा, क्योंकि आप इस विषय के पारंगत हैं। और मेरी शुभकामनाएं जो हमारे बोर्ड पे अंजलि दिख रही है, हैविंग द लीडरशिप क्वालिटी, ऋषभ दिख रहा है, जिशान दिख रहा है, जयेश दिख रहा है। यार हम किसका किसका नाम ले, जिसका नाम छूट गया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अनगिनत सितारे हैं आकाश में,
इस अपने मंडल पे अब आकाश जब दिखता है तो न जाने कितने सितारे हैं जिनकी खुद की रोशनी है। अरे मैं चंद्रमा और ग्रहों की बात नहीं करता हूं जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, मैं उन सितारों की बात करता हूं जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और अन्य को भी जो है प्रकाशित करते हैं। आप उस दिए की तरह हैं जो जो जिसके धरातल में जो अंधेरा तो होता है, अपने तो दुख भोगते हैं परंतु दूसरों को प्रकाशित करते हैं। आप उस वृक्ष की तरह बनिएगा जिसके पास घमंड नहीं होगा, अहंग नहीं होगा। अगर कोई पत्थर भी आपको मार दे तो आप उसको एक फल दीजिएगा, एक रिजल्ट दीजिएगा। सो यू मस्ट बी रिजल्ट ओरिएंटेड। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद। गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब है ना, हम बीआईटी का क्लब लेते हैं तो क्लब से ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया है, वर्ल्ड है। बाकी ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि जीडीएस में जो है गूगल डेवलपमेंट स्टूडेंट क्लब्स में बीआईटी सिंदरी अव्वल रहे। हमारी तुलना जो है विश्व की जो मतलब उपलब्ध लब्ध प्रतिष्ठित जो हमारी जो संस्थान है, एमआईटी, हार्वर्ड, कैलिफोर्निया और उसके बाद भारत की जो आईआईटीज, एनआईटीज, तो इनसे हमारा कंपटीशन है। और हम कोशिश कीजिएगा बेटा, मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम 1 साल के अंदर ही हम इनसे ऊपर चले जाएंगे। हम आपसे, मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि तुम लोग कोई भी जो है एक अपने आप को कन्वर्ट कर लो इसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में, कि हमारा भी दिखे कि हम 40 लाख 50 लाख में बिकने के लिए तैयार बैठे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि बीआईटी सिंदरी में 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख तक हम पहुंच चुके हैं। और जो लड़के कंपीट कर रहे हैं, जो लड़के कंपीट किया है ना, एक लड़का अभी, वो उसको आप कभी पहचानते भी नहीं होंगे। अभी जो हमारा जो अभी एक रिजल्ट आया 13 लाख का जो है, उसमें इन्फो एज में वो लड़का कितना साधारण, कितना प्यारा सा दिखता है। तो मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। और the woods are, याद रखिएगा, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. Thank Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Teachers' Day has spent well with your best wishes, sir. Thank you, Ghanshyam sir and Dinesh Prabhakar sir for joining. Okay. So let us start ahead. Uh, Now comes the core team introduction part. So hello everyone. I am Anjali Kumari, you. Right. second year undergraduate at BIT Sindri from the discipline Chemical Engineering, and a competitive programmer, and has achieved beta achievement in the Microsoft Learn Student Ambassador Program. Also being an intern at GREEP, the Spark Foundation. Also attended the Hacktoberfest October 2020 and has shortlisted to contribute in the Girl Script Winter Code of Contributing 21. And by skills I have Android, and I love to do Android development with Kotlin. So please change the slide. So the next core team member is Riya Kumari. He's a second year undergraduate from the branch of CSC, a web developer, an open source contributor, participated in Hacktoberfest 2020, and a cloud enthusiast. Are we having Riya among us? Okay, no problem. Please change the slide. Okay, so our next core team member is Zishan Ashraf, a second year undergraduate from the branch ECE, and he will be leading the GDSC community chapter, being a technical lead. And he's a full stack developer by profession. Please change the slide. So our next core team member is Abhinav Kumar. He will be leading the GDSC community chapter as a management lead, a second year undergraduate from the branch of mechanical engineering, BIT Sindri. And by profession, he's a UI UX designer and also a graphics designer, a data analyst, and a Flutter enthusiast. Okay, next slide, please. Okay, so our next core team member
is Rishabh Gupta. Uh, by profession, he is a vector artist, also a graphics designer and a UI UX designer. He is a second year undergraduate from an electrical engineering branch and will be leading the GDSC community chapter, being the graphics lead. So, meet our last team member, that is Jayesh Kumar. He is a second year undergraduate at BIT Sindri and from the branch CSC. And he will be leading the GDSC community chapter as a competitive programming lead. And also by profession, he is a competitive programmer. So that is all about the introduction or meeting with the faculty advisor and the core team members. The selection of core team members is based on the registration responses that I had circulated on the social medias or everywhere. Those who had filled the response got the opportunity, got the opportunity to come uh, to be shortlisted for the core team member position. And that is all. That is all. From the GDSC side, I has the limitation that is I has to choose only 5 core team members, excluding me. So this is all about the faculty advisor and the core team members. So now let us move to the agenda of today's session. That is what GDSA is all about. That most of you has the confusion. So I'll be clearing that confusion. So what is GDSC? So GDSC stands for Google Developer Student Club. So as the name suggests, this is the community group for college and university students interested in Google developer technologies. Peoples from all over the world gather and form a network and learn and grow within the network, learning from each other or taking the experience of each and every member within that community. Okay. So students from all undergraduate or graduate program with an interest in growing as a developer are welcome. By joining a GDSC, students grow their knowledge in a P2P learning environment and build solutions for local business and their community. And also GDSC is supported by Google developers all over the world. Okay. So what we will be going is as a core team members, we are responsible for providing you the resources, all the resources uh, about the events or the workshops that are being conducted by the Google developers, okay, on the technologies, on the Google technologies, okay. So in this year, we have the fortune to make these facilities available to the students at our college. Okay, this is the opportunity that that the people can make benefit of. By sorry, my voice is echoing. Is there is echo? I think I think all other participants should mute their mic. Yes, the sounds is echoing. Please. Okay, now it is better. So we as a core team member are responsible for providing the students at our university with each and every opportunity that by chance they will miss, or they can't they won't be able to aware, they can't get they won't be able to get the latest notification regarding that. So if you don't want to miss any of the opportunity, you must have to be a member of this Google developer student club. Okay. And everyone from our university or outside our university can be a member, as there is no restriction. From students from
all undergraduate and graduate programs with an interest in growing as developer are welcome. So students, all the students can be a member of this community by following the 2 basic steps that I will demonstrate in the event later. Okay. So that is all about what the GDSC is. So what are the benefits that being a member one would get? So next slide. Yeah. So benefits of being a member. So if a member joins the Google Developer Student Club community, they will get a complete friendly environment. Like in that environment, they will get the exposure to learn the relevant technologies, will be able to grow their experience by conducting many of the event sessions or by delivering their knowledge, and many more along the way. I will be sharing my experience that how I get selected for the GDSC lead and what the role of community is in my life. Okay. So when I entered the college, I joined the hackathon and coding club, BIT Sindri. Okay. And there, with the help of Dinesh Kumar Prabhakar sir, with the help of his guidance, I grow up myself, learned many of the new technologies, and under the guidance of seniors there, who provided me who provided me with all the resources and the guidance in each and every step of my life. Okay, till yet. So I started from the 0 level and has reached to some level now under the guidance of the seniors and Dinesh Kumar Prabhakar sir. So community plays a very important role in the upliftment of a being, okay, interested in technologies. Like if you are interested in technology, do join a community of technology enthusiasts. If you are interested in developing interpersonal skill, do join a community which will enhance your interpersonal skill. Okay, there is a continuous learning by joining a community. Okay, and how I would get selected for the GDSC lead, I want to share that too. So in the November December 2020, I had participated in an event, a 30 days web dev program organized by Developer Student Club in association with Scalenza. And there I had completed all the tasks and the quizzes, okay, and has secured the cutoff marks and has got the excellence certification from the DSC side. And also during the program, I had contributed to the DSC site that the event organizers are using to conduct their event. I found some lack of information there, and I suggested the modification, and that modification is accepted by the event organizers there, and they merged my modification. Okay, so this is the second achievement. And while applying to the GDSC lead, I had mentioned all of my achievements, and I think this is the plus point that I being selected from many of the applicants who were applied from the BIT Sindri. Okay, so here I have shared you the importance of community and also the importance of being a GDSC member. Okay, so next slide. So yeah, so what we will be going to do in the whole 1 year span. So the agenda of this Google Developer Student Club community is to conduct 5 sessions overall, in total 5 sessions
That is the Android campaign, Cloud campaign, Flutter campaign, Cloud campaign 2, and Web campaign. So this is the 5 campaign that we will be going to conduct over this 1 year span. And during these campaign, it's our responsibility to make the students at our college aware of all the events or the workshops that are being organized by Google developers, so that you can also avail the opportunity and can explore or learn about Google technologies. So during the campaign we will be inviting guest speakers, okay, and technical events, webinars, technical campaigns, community events, all that will be going to happen in the whole 1 year span within the boundary of the 5 campaigns that I have told. Okay, so this is the agenda of the whole 1 year span. If you want to get selected as the if you want to be a GDSC lead for the next year, and want to continue this GDSC community chapter in our college, you must have to uh, actively participate in each of these activities. Likewise, I have shared my knowledge that how I participated in the DSC Developer Student Club program and how I get selected for the GDSC lead. Okay. So with the help of yours, we will be able to continue this journey for the next upcoming years also. So that is all about our plan. So next slide, please. Yeah, so how can you be a member? So as I have told that everyone within or outside the college can be a member of this GDSC community chapter by following the 2 basic steps. That is, first, create an account on GDSC community page. The link has been provided here. Just go to that link, that is the dsc.community.dev. Please anyone provide the link in the comment section so that people will sign up. We will be providing this slide to all of you via our feedback form, so don't worry. So yeah, the first step is to create an account on GDSC community page, and the second step, after creating the account, go to the chapters and search for Birsa Institute of Technology BIT Sindri, Dhanbad, and you have to just join our chapter. And after that, you will be authorized as a legal member of GDSC BIT Sindri. Okay, so this is all about how one can be a member of this community and how one will get benefited from it. Okay, so to take advantage of this, you must have to be a member, because if you don't do this, you will not get regular updates, because this is the automated system by which you will get the notification about all of our events that we will be conducting or we will be demonstrating to you in the whole 1 year span related to Google developer technologies, the all campaigns and all about that. Okay, so this is the major step. You must be a member of GDSC BIT Sindri on the whole. So next slide, please. Yeah, so it is the time of fun event. So let us have some fun. So we have organized a small quiz section of about 1 to 2 minutes for the audience to enjoy. It is based on the technology only. So I would like to introduce Aniket from the first year. Aniket, please take the charge. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. Moving on to the next section, which is the fun event. So let me make you clear with the instructions first.
An incomplete word related to some technical domain is displayed on your screen, and some interesting facts are given respectively with each word. You have to guess the word within a time limit of 10 seconds. You will get a time of just 10 seconds to answer it or to guess the word, what it is. So, can we have the next slide? Yes, this incomplete word is displayed on your screen. This popular CSS framework is developed and maintained by Twitter. Twitter maintains it, and its fast prototyping, pre-styled components, and ease of integration are a few reasons for its popularity. Are you guys getting it? Can you guess it? What it is? Yes, I can see the answers. All of you have got it. It's Bootstrap. So next slide. The answer slide. Yes, it is Bootstrap. Okay, the Very next nice, word. very nice, guys. You are going very well. The most popular project on this platform is Bootstrap. It is written in Ruby on Rails and Erlang programming languages. Can anyone guess it? Okay, I can see the answers. Okay, you guys are making great attempts. Let us see the answer slide. Yes, it's GitHub. All of you are giving right answers. So can we move to the next slide? The third word. Okay. One of the it is one of the core concepts of object oriented programming. It can be used to declare different kinds of exceptions, add custom logic to existing frameworks, and even map the domain model to a database. It is a core concept of object oriented programming. Okay, I can see Yeah, the answers coming from the audience side. very well, guys. You are playing very well. Yes, it's inheritance. The next word is it is an HTTP library that makes networking for Android apps easier. It was developed by Google and introduced during Google Input Output 2013. An HTTP library. Make a guess. Most of you are getting the spelling incorrect. Yeah, I can see the right responses also. Can we have the answer slide, sir? Yes, it's Wally. So the next one. It is one of the two Git utilities that specializes in integrating changes from one branch onto another. It rewrites the project history by creating brand new commits for each commit in the original branch. A very important thing. Okay, I can see the answers coming. One of the two Git utilities that specializes in integrating changes from one branch onto another. Okay, we have received responses. So can we have the answer slide? Yes, it's rebase. Okay, So, yeah, so we are done with the fun event thing. Now now ma'am will be taking the charge from here. okay. Thank you, Aniket. And you guys have played very well. This ensures that you are in technology enthusiast. You are a technology enthusiast, and you must join us because
We are here to provide you with the benefit. Uh, we are making an attempt to make you familiarize with the importance of technology, why one should be aware of that. So if you are interested in technologies, do join us, and I promise you that within this 1 year you will be ending up gaining a lot in the field of Google technologies, that we will be the resources of which we will be providing to you. So come, join us, be a member of GDSC BIT Sindri, follow us, connect with us on our social media pages. Facebook, here is the link provided. You can connect with us on Facebook. You can connect with us on Insta. We are having the 4 social media handles, that is Facebook, Insta, LinkedIn, and Alma Connect. Just go and like the page and follow our social media handles to get regular updates about our event that we will be conducting during the year. And so yeah, that's about today's session. If you are having any query regarding GDSC, then it is the Q&A time. You can ask in the comment section. I will be getting here. Anyone is having any query, or I have cleared all your queries? Are we having any query? So there is no query. Okay, it means I have resolved all your queries about GDSC, what GDSC is, and how one can be a member. This is the basic and the common questions that everyone is having, and I had cleared it in the beginning of the session. So there is no query. So thank you for joining. If you are having any query, we will circulate a feedback form. Okay, you will have to provide your feedback about the session, and we'll have to answer all your we will have to put all your queries, and we will be getting back to you soon. Okay, so thank you for joining. That is all about the session today. Hope you have enjoyed, and also the session becomes very special by the involvement of our professors, that is Professor Dr. Ghanshyam sir and Dinesh Kumar Prabhakar sir. On this special occasion, we get their blessings by this session. So this session proves very special for me. So thank you for joining, guys. uh, Hope we will be meeting in the next session soon. Thank you.